See, where did you get this soft copy from the e-Gyan course? Yeah, Gyankosh, I'm taking soft copy from there only. Hard copy I don't have. So, in the same place where you have taken this self-learning materials, you will get the program guide, project manual, everything. So you download that also, the program guide. Okay. Okay, and in the program guide, it is given. I mean, like the format is given. What should be the cover page of your assignment? I mean, like basically your name, enrollment number, the course code, everything you have to write. Then you start writing the assignment responses. I mean, like for each course, there are 3 questions. This has to be in 500 words. So write the first question, give the response on your own words. Don't copy anything from the self-learning material. Understand the idea, then put it on your own words. Submit to the study center. Okay. Okay, I if your study center is regional center, then submit at the regional center. But when you are submitting, take a photocopy also. If at all in some case, if it misses, you can, okay. resubmit that. Both the pages we can write in an A4 size paper. Both the pages we can. Yes, yes. Personally, I have to go and submit. No, not this one. I have to go and submit to study center, right? Study center, but you talk to the study center people if they can accept the, I mean, like a postal material. If they say yes, you can post also. No issue. Okay. Good evening, all. Good evening. Good evening. So, what all, I mean, like counseling or lecture you had? I had only 132 because yesterday I couldn't attend. Then I was traveling day before yesterday. Only the one I could attend. 131 I couldn't attend. Only 132 two classes with Okay. that ma'am, Kiran ma'am. Okay. 131 classes we will get again. Yeah, I think this, I mean, like you can, inquire with this RC Chandigarh, those who are coordinating this. Somebody will be there. Okay. Today it is 134, right? Today, let us see. I mean, like, इससे पहले जो क्लास हुई थी सर, हाँ, जितेंद्र सर की क्लास हुई थी, तो ठीक है। उन्होंने सारी जो अपना मॉड्यूल थे सारी यूनिट कवर की हैं अपने डेली सेशन में। तो उनका डिस्कशन मोड में वो करते थे पार्टिसिपेंट के साथ में, अच्छी हुई। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा शेड्यूल था किरण अंगोरा मैम के साथ में था। ओके। तो उन्होंने अपना पूरा शेड्यूल पे क्लास की, पीपीटी के दोनों हमें यूनिट वाइज ओवरव्यू कराया और डिस्कशन किया उन्होंने। नेक्स्ट जो ये तीसरा हमारा शेड्यूल था ये वाला, इस शेड्यूल में थोड़ा सा 2 शुरू के दिन पहले दिन आपका ही नाम था तो हो नहीं पाया था सेशन। कल जो थे जो आरसी सर ने ही हमारा एक पूरी कम्युनिकेशन वाले एक बुकलेट ले ली थी, उन्होंने कहा कि हम डिस्कशन कर लेते हैं, उसको गो थ्रू दोबारा एक हमने चर्चा की थी उसके ऊपर, कम्युनिकेशन वाले के ऊपर। तो अभी तक ये हो रहा है। शुरू के 2 सेशन तो कंप्लीट हुए काउंसलिंग के। थर्ड सेशन में आज थर्ड डे है और कल हमने एक ऑलरेडी जो प्रीवियस हो चुका है उसी की एक बुकलेट लेकर उसको डिस्कशन किया था टाइम को यूटिलाइज करने के लिए। आपका कब का बैच है विकास जी? जनवरी 2023। ओके। कितने लोग हैं इसमें? वो आरसी चंडीगढ़ से कोई है इधर? तो सारे लोग आ गए क्या इसमें? विकास जी, प्लीज 2-3 लोग और ज्वाइन करते हैं, वो आज नहीं दिखाई दे रहे। कल जैसे 5-6 लोग थे कल, ओके। तो अधिकतर अभी तो 3-4 लोग ही रहते हैं। ओके 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 कल संख्या ज्यादा थी। ओके। हाय सर। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। आपको ही वेट कर रहे थे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाउ आर यू सर?
बढ़िया एक्चुअली चल रहा है सर दिल्ली में। ये जो सेशन है, these all sessions are being recorded और ओके यूजुअली 6 to 8 स्टूडेंट रहते हैं, है ना। एंड इसको हम अपलोड कर देते हैं आरसी पर, एंड इट मे बी यूज फर्दर। ओके सो yesterday I just discussed the matter 131. Now the floor is for you. अभी कौन सा डिस्कस करना है सर? अभी मैं 133 One, करूँ फिर? 133, 133. ओके थैंक यू। तो शुरू करें सर? Sure, sure. ओके सो वेलकम पार्टिसिपेंट्स। मैं जो थोड़ा मेरा इंट्रोडक्शन भी बता दूं, आई एम डॉक्टर अजित कुमार। मैं जो अपना जो इग्नो हेडक्वार्टर्स में स्कूल ऑफ एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। नंबर 2, I am one of the coordinators of this program, postgraduate diploma in educational technology. There is one more coordinator, her name is Professor Sutapa Bose. जैसे आपको पता होगा, जैसे ये कोर्स में देर आर 4 courses, theoretical courses, MES 131 to 134, MES 131, 132, 133, 134. Then there is one more course which is a practical course, that is MES 135, MESP 135. सो बेसिकली आपको आइडिया होगा, जैसे जो PGDET के जो स्ट्रक्चर यही है, जैसे देर आर 4 theoretical courses and 1 project course. So what happens, I mean, like the theoretical courses you have to study on your own. If you have any doubt, the RC जैसे करता है, जैसे counseling classes they will organize, so we can clear all your doubts which you have. So theoretical courses you will study, and this is a 1-year course. So after 1 year you will attend your term and examination. So those who have taken admission जो January 2023 में, तो उनका ये दिसंबर तक 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो द कमिंग दिसंबर यू कैन गिव योर फाइनल टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर ऑल द थियरी कोर्सेस, 4 थियरी कोर्सेस. So for the 4 theory courses you can appear for the term and examination, which is going to happen in the December 2023. Now उसके पहले आपको जो 4 theory courses में, in each theory course you will have assignments also. तो असाइनमेंट जैसे यूजुअली 3 क्वेश्चंस होगा, ऐसे टाइप क्वेश्चंस होगा which you have to attempt in 500 words, and you have to submit this assignment responses in your study center. किसी का study center regional center भी होता है, तो that you talk to the regional center and submit. Otherwise it is usually submitted at the study center. That will be graded and the responses, the grades will be sent to the IGNO headquarters. फिर जैसे दिसंबर तक आपको जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आपको जमा करना होगा. यू हैव टू गो थ्रू द प्रोजेक्ट मैनुअल. वी हैव गिवन वन project manual also. So project manual has given the complete details of what all activities you have to do in each of the courses. So from all the theory courses, whatever theory you have studied, उसका related कुछ वो भी है जो questions होगा, 3 questions. So that you write on your own and submit at the study center, or if regional center is your study center, submit at the regional center. Sorry, this project for each theory courses there are questions which is practical in nature. So sometimes you have to go for some surveying, sometimes you have to develop some teaching learning materials which are digital in nature. Then you prepare the project report, you submit the project report at the regional center. So don't get confused. The assignment responses, it is usually submitted at the study center, but the project report is submitted at your regional center. So when you submit your project report at your regional center, ये भी आपको रिक्वेस्ट करना होगा थोड़ा उसका जो वाइवा होल्ड करने के लिए. So the regional center will hold the viva for your project report. तो उसका evaluation दो will happen in 2 ways. One, we will be evaluating your project report. Second, आपको viva में मार्क भी मिलेगा. तो स्टडी सेंटर में आप असाइनमेंट जमा करेंगे और
जो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप रीजनल सेंटर में जमा करेंगे, साथ साथ उसका वाइवा करने के लिए भी आप रिक्वेस्ट देना होगा. सो दे विल होल्ड एट ए कन्वीनियंट डेट, विल बी डिस्कसिंग विथ यू व्हेन टू होल्ड वाइवा एंड ऑल. तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर. अदरवाइज आप कुछ डाउट है तो आपको वो भी आपको डिस्कस कर सकता है. अदरवाइज आई हैव ए कंप्लीट PowerPoint presentation of this entire PGDET program, which right now I am not going to display. तो जैसे मैंने बताया, जैसे we have 4 theoretical courses. There are 2 coordinators, program coordinators for this program. One is myself, the other is Professor Sutapa. The theoretical courses are managed by other faculties also. जैसे there is one MES 131, which is some introduction to educational technology. This is coordinated by Professor N.K. Das, who is a faculty of this School of Education. MES 132 has something related to the computer technology, which is managed by Professor Bharati Dogra. MES 133 is managed by myself. That is about selecting and integrating technology. There is one more theoretical course, MES 134, who manage किया है the other coordinator, Professor Sutapa Bose. So if you have any specific doubt related to that course which you are studying, learning, you can ask either the program coordinators, or you can also reach out to the respective faculties who are managing, coordinating that particular course. MES 131, Professor Das; MES 132, Professor Bharati; MES 133, myself; MES 134, Professor Sutapa Bose. Yes, sir, if you have any doubt on the एक मिनट विकास जी, you have any doubt on the practical project work which you are doing related to that particular course, theoretical course, आपको हमको भी कांटेक्ट कर सकता है, या अदरवाइज यू कैन आल्सो कांटेक्ट द रेस्पेक्टिव कोर्स कोऑर्डिनेटर्स. ओके विकास जी बोलिए. सर एक तो जैसे अभी मैं प्रोजेक्ट की बुक भी देख रहा था, जो आप प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे थे, तो उसमें देख रहा था कि हमें बहुत सारी एक्टिविटीज दी गई हैं उसमें. बिल्कुल. और एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को रीच आउट करना होगा, और वहाँ पे जाके 50 स्टूडेंट के साथ में कुछ हमें जो टास्क दिया हुआ है, सब एग्जाम्पल आईसीटी के बारे में जानना, वो जानना होगा. तो उसमें एक शुरू में परफॉर्मा भी दे रखा है, पर वो परफॉर्मा में मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा हमें कोई साइनिंग कोई मिले, कोई हमें आरसी से, तब जाके हम अथॉरिटी के साथ जा सकते हैं कि हम इग्नू के कोर्स कर रहे हैं और इसलिए हम आए हैं, या केवल उस परफॉर्मेंस से काम चल जाएगा. एक तो इस पर आप मुझे टिप चाहिए थी, गाइडेंस. ये तो उन्हें इंट्रोडक्शन देंगे अपना, तो हम किस अथॉरिटी से जा रहे होंगे, मतलब हम एज ए स्टूडेंट हैं, या आप थोड़ा इसको बता दीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ. जैसे whenever we go to any educational institution for collecting data, it's always good to have some kind of a letter. Yeah, तो जैसे if you are doing PGDT, it is always good to have a letter from RC. बट आप देखिए, जैसे आपका जो कोई नियर बाई इंस्टीट्यूशन में है, उसको लेटर का जरूरी नहीं है, या सिर्फ आपका जो इग्नो का जो आइडेंटिटी कार्ड से काम चल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं. आप आइडेंटिटी कार्ड दिखा दीजिए, I am so and so student, I wanted to do this research data collection, so kindly permit me. If the educational institution head or principal or director agrees, then this identity card is self-sufficient. Otherwise, if they ask for some letter, you get it from the RC or the study center. You see whether the study center letter is okay, that is enough. Otherwise, if they are not allowing with your study center letter, you approach your regional center. तो सेकंड क्वेश्चन कि जब हम ये कर रहे होंगे तो डॉक्यूमेंटेशन, जब हम रिपोर्ट तैयार कर रहे होंगे, तो उसमें क्या हम कुछ पिक्स या वीडियो या डॉक्यूमेंटेशन के लिए, वो यानी जो जिसे कहते हैं वैलिडेट करने के लिए जरूरी होंगी, या केवल हमें रिपोर्ट ही देनी है? जैसे लिखा था कि आपको डाटा की रिपोर्ट, अधिकतर जो नीचे नोट्स में लिखा था कि डाटा रिप्रेजेंटेशन, डाटा क्लासिफिकेशन और इन्फरेंस वगैरह लिखना है. उसमें हमें क्लियर निकल के नहीं आ रहा है कि वो थोड़ा सा और गाइडलाइन की मुझे लगा कि और एक्सप्लेन होना चाहिए कि किस तरह की हमें उस पिक्चर या कुछ वीडियो जैसे एजुकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करना है, या फिर A4 साइज पे लिख के दे देना है. वो तो प्योरली डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन एंड द प्रोजेक्ट वर्क दैट यू आर अंडरटेकिंग. सी जैसे डाटा कलेक्शन के लिए जाएगा तो इट इज जस्ट ए मिनिएचर फॉर्म ऑफ द रिसर्च. आपको भी पता होगा, जैसे हम PhD रिसर्च करता है या जो मास्टर्स में रिसर्च करता है, तो हाउ वी आर फ्रेमिंग, हाउ वी आर राइटिंग द रिपोर्ट, वो जितना भी जो उसमें जो टेक्निकल चीज़ें होगी, जैसे ग्राफ डालना है तो आपको डाल सकता है,
just to bring the reliability of the work that you have done. आपने तो बहुत ट्रू तरीके से किया है, दिस इज व्हाट आई एम प्रेजेंटिंग। तो जितना भी उसको आपको जो आपको डाटा को रिलायबल करने के लिए, प्रूफ करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सारा आपको डाल सकता है, उसमें कोई वैसे लिमिट नहीं है। इफ यू वांट टू पुट सम पिक्चर्स यू कैन डू दैट, research kind of questions, okay? Otherwise if there is something like you want, if you are set to produce some PowerPoint presentation, आपको तो फिर PowerPoint presentation बना के उसके साथ साथ एक छोटा सा CD में वो राइट करके आपको दे सकता है। Otherwise you have to put it in some maybe some storage spaces like जो Google का ड्राइव आपको यूज कर सकता है, फिर उसका लिंक आपको शेयर कर सकता है, ओके? तो तो यहाँ पे ये सर एक सारा क्वेश्चन हो गया कि ये सारा तरीका है जितना भी, जैसे सी वी हैव टू प्रूव वी आर वर्किंग फॉर, आई मीन लाइक ultimately the intention is we have to learn, that is the primary. Second is you are also submitting it for grading that work. So जितना भी आपको ग्रेड, अच्छा ग्रेड मिलने के लिए क्या क्या उसका चीज़ें चाहिए वो सारा आपको डाल सकता है, कोई उसमें हार्ड एंड फास्ट रूल वैसे नहीं है। हाँ समझ हाँ गए। बोलिए। असाइनमेंट के लिए रूल है कि हैंड रिटन असाइनमेंट देने होते हैं। बिल्कुल। तो अभी जैसे आप प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट में हम चाह रहे हैं कि हम उसे डिजिटली बना के, हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन द्वारा या फिर हमने उसे अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हुए बनाया, फिर डिजिटली क्लाउड पे डाल रहे हैं, तो ये अलाउ होगा या वहाँ हैंड रिटन की कोई कंपल्सन है प्रोजेक्ट वर्क में? नहीं, कंपल्शन वैसे कुछ नहीं है। एक बार देखिए, जैसे सी व्हाट हैपन समटाइम्स, इसका तो वाइवा भी होगा। सो इफ द एग्जामिनर वांट्स टू सी योर वर्क, सो उसका तो प्रोविजन होना चाहिए। इफ यू हैव मेड सम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इफ इट इज गिवन इन CD, it is easy for them to look, okay? Otherwise if you are giving in some storage spaces, उसका तो थोड़ा फिर उसका मेहनत ज़्यादा होता है, लेकिन कोई वैसे उसको तो वैसे देखना ही चाहिए होगा, जैसे then only he can give you the grade and ask questions related to the work. So जिस तरीके से आपको उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे एग्जामिनर तक आपको you have to make it reach to the examiner, so that is only the ultimate, I mean like aim of that project work. लास्ट क्वेश्चन एक और है सर, कि ये जो प्रोग्राम जो है उसकी रिगार्डिंग है कि ये जैसे हम एक दो हम जो कलीग है तो हम कोलाबोरेटिवली डाटा रिसर्च के इसे कर सकते हैं, या हर एक का इंडिविजुअली अलग अलग होना चाहिए, या सेम डाटा को जिस स्कूल में हम साथ जा रहे हैं तो हम दोनों उस डाटा के पे अपना रिपोर्ट इन्फ्रेंस शेयर कर सकते हैं? वो आप एक बार देखिए जो प्रोजेक्ट मैनुअल में, जैसे हर एक्टिविटी का प्री प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, ड्यूरिंग प्रोजेक्ट एक्टिविटी, पोस्ट प्रोजेक्ट एक्टिविटी, ये सारा क्लियरली मेंशन किया हर एक्टिविटी के साथ। इफ इट इज रिटन देयर, I mean like then you can go for the collaborative work, otherwise individual activity will be preferred, okay? आप एक बार देखिए हर एक्टिविटी, देखिए कैसे कैसे लिखा है प्री एक्टिविटी में, पोस्ट ड्यूरिंग द एक्टिविटी आपको क्या क्या करना है वो भी आप देख लीजिए, उसके हिसाब से आप कर दीजिए। थैंक यू लेकिन सर। थोड़ा बहुत वैसे आगे पीछे हो सकता है, उतना हार्ड एंड फास्ट। अल्टीमेटली द थियरी वी आर लर्निंग, that is put into practice and we are helping the learners to get the knowledge of how this can be done in a practical way. This is the ultimate aim of that project component, just like the way we do research in the other courses. I mean, like, we were also planning like project research work, but we thought this is going to be more useful for the PGDET learners, because ultimately they have to learn something to, I mean, like develop some digital kind of resources which they can use in their teaching learning practices if they are into the teaching job or somewhere in the e-learning industry. So that is only the ultimate aim. तो वैसे क्लियर कट लिखा है, लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, उसमें कोई वैसे बुराई नहीं है। विकास जी, थैंक यू क्लियर सर, हो मेरे गया क्वेश्चन आपका? एड्रेस किया आपने बहुत अच्छे से, वेरी वेरी। और मणिक जी कुछ बोल रहे थे आप? नमस्कार सर। नमस्ते जी। Sir, actually, I want to ask you regarding this one MES 135, sir. And here in MES 135, that means in each course, that means there are many activities given. So out of these activities, we have to select, I think, 2 credits, sir. For each course. For each course, 2 credits. So the project will be of 8 credits. Sir, here suppose activity 1, here credit is given 1/2. Shall it be taken as a half, or it can be taken 1 credit out of 2? That means a little bit confusion is there.
So There are 1.5 credit activities, half credit activities. It is like that, na? yeah, so 1/2 it is mentioned here. So I want One to by just two means half credit, 1/2. So if you if it want is, to get 2 credits, you have to do 4 1/2 credit, yes, sir. activities, Yeah, right? and some activities are given 1 credit, but in other activities, that means it is mentioned just credit 1/2. So I was just confused. That means it is taken as 1 credit out of two, or it is taken as half, sir. So That's that's why I half. want to verify That this one. is half credit only. That is Half half credit. credit. So Okay, if you thank you very want to, जैसे मैंने बोला, if you want to get 2 credit, then you have to select 4 half credit activities, much. Yes, sir. है ना? So And that will suppose, give you 2 credit. yeah. And if I select 1 credit, one activity, and 2 half credit activities, then 3 activities will be taken, sir. Done. Yes, absolutely. Thank you very much, sir. One credit and 2 half credit courses. So that Uh, will come to 2 credit that way yeah, together. thank you, sir. So one more thing, sir, I would like to share here. Actually, I communicated with you over email. That means many times Okay. regarding one course, postgraduate diploma in higher education. Oh, that we will discuss later. Yes, sir. Maybe at the end of this session. Okay. Okay, thank you very much, sir. Thank you. So let me just give you a brief idea about the course which I am coordinating. The rest also we will see, depending upon the counseling sessions which we have. So right now I am going to give you some understanding about the course MES 133. Maybe some topic also I'll handle, which is about the open education resources today. तो आपका see, Dr. Chitra was asking, let me see, this course was there some 15 years back we have launched, but in 2021 we have revised these courses. 2021. Okay, so those are taking admission from 2021 January admission onwards. They are studying the new material. Those who are enrolled before 2021, they will be studying the unrevised material. So जैसे when you go to the, I hope this is visible, IGNOU website I am sharing. You can see. Can somebody respond to that? Yes, sir. Okay. Yes. EGAN question. This is the place where we deposit, upload our self-learning materials. So जैसे IGNOU self-learning materials, School of Education, you will go to School of Education. Level से bachelor है या post graduate है, master's degree है, so we'll go to post graduate diploma programs. फिर जो पुराना मटेरियल आर्काइव में जाएगा, जो करंट कोर्स है करंट में आ जाएगा. तो आई विल क्लिक ऑन करंट. समटाइम्स यू विल सी ऑल द कोर्सेस देयर, है ना? देखिए current courses that was also running. Maybe by this year or next year we will be removing this also. There are some students who have taken admission before 2021, so we have retained that. So that's why you are seeing 2 courses here, the same courses, postgraduate diploma in education technology. This is the old course, this is the one which you have enrolled. Those are taking admission from 2021 onwards. They are taking admission in this course, postgraduate diploma in education technology revised. So see, when you click on these, you will see MES 031, yeah, MES 31, MES 32, 33, 34, 35. This is MES 31, not 131. So this is the old course. Okay, those are taking admission. Let us come back. अब इसमें देखिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी रिवाइज्ड. दिस इज द रिवाइज्ड कोर्स विच यू हैव टेकन एडमिशन. तो इसका टाइटल में भी फर्क होगा, ये नंबर में भी फर्क है. MES 131, MES 132, MES 133, MES 134, MES 135. Okay, this is what I was saying. This is coordinated by Professor Das. This is coordinated by Professor Bharati. This is myself. This is coordinated by other coordinator of this PGDT program, Professor Sutapa Bose. This is one thing. Similarly, when you go to the student zone, where your assignment is there, assignment student zone, assignment. I'll just look for the assignments. Now, PG diploma programs. So you will see all the PG diploma. Somewhere you can locate the PGDET also. This is not a PGDET. This is something else, PGDET. Okay, we look for PGDET somewhere. So don't get confused on this also.
Let me again search PGDHE, PGDHM. PGDEMA. No, it's there now, ma'am. Sir, it's up. On the top. Yeah. Just besides Still, PGDT. Ah, yeah, here, yeah, here. here, middle. Okay. So here also you will see some, I mean, like learners were having confusion. See, we have written MES 131 to MES 134, January, July 23 revised. So this, see, there is somebody to mute the mic. There is somebody to mute the microphone. Okay, thank you. So see, assignment may be, you know. So assignment submission doesn't have any connection with your enrollment year. See, suppose anyone has taken admission in the previous year in 2022, but they somehow forgot or they could not submit the assignment in 2022. So what they will do, they will submit the assignment in 2023. 2022 has gone. If they are submitting assignment in 2023, they have to submit this assignment, not go and attend assignment questions. Even if their admission year is 2022, but since they are submitting assignment in 2023, they have to submit this assignment questions only. What I mean to say, there is little bit of that way confusion. It doesn't depend upon the admission year. Okay, but those who have taken admission in 2022, if they are submitting assignment in 2022 itself, they have to submit this assignment only. And see, जैसे you can see MES 131, MES 134. So anyone who has taken admission from January 2021 onwards, this is for January 2021 onwards. So those who are attending this session might have taken admission in 2022, yeah, 2023. So if you are planning to submit the assignment, this is the assignment question which you have to attempt. This one, the first one. Now if somebody is there who have taken admission in 2020, okay, they will not be able to submit the assignment in 23. But if somehow if the university gives a chance to submit the assignment, then they have to submit this assignment only 2023, even if they have taken admission in 2020. 3 साल पहले उन्होंने admission लिया था, but right now in this year only they are going to submit the assignment. Then this is the assignment they have to submit. I hope I'm not making confusion. Okay. I hope you all have taken admission after January 2021. If at all anyone has not submitted assignment in the previous years, irrespective of your admission year, if you are submitting in 2023, don't look for any of these assignment questions. You can see otherwise, no issue. But this is the assignment question that you have to respond or attempt. MES 131 to MES 134. Rest you can just leave. And if you fail to submit assignment this year also, because we have a maximum duration also, somebody who has taken admission in January 2023 this year, somebody was saying in April 2023, that is the January admission cycle. So if you have taken admission in January 2023 cycle, but you are failing to submit assignment this year, okay, if you are failing to submit assignment in 2023 by December this year, don't worry. By January 2024, in the month of January, new assignment questions will be coming in this tab. Okay, in January 2024, new assignment questions will come. So if at all you are failing to submit in this 2023, and if you are planning in 2024, you will get assignment questions by January 2024. You have to wait till that is uploaded. Okay, then you can work on. So these are two things. So this is the revised one, MES 31 to 34, and the project, this is project MESP, that's why it is written MESP. This P is project. Okay, so I'll just go through this and I'll just handle one of the topics which is there in this. Okay, I'll just make you run through this block also. I mean, like, this is the material which you maybe
reading the self-learning material of MES 133. This is talking about how basically the main idea is how you are going to select a technology. कोई appropriate टेक्नोलॉजी कैसे आपको एजुकेशनल प्रोसेस में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, हाउ यू आर गोइंग टू सेलेक्ट दैट, फिर आप इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. So this is basically about that, giving you idea. Okay, but related ideas भी इसके साथ साथ डिस्कस किया. दैट्स वाई जो भी जितना भी जो इग्नो से कोर्स किया होगा उसको थोड़ा इसका आइडिया भी होगा. जैसे द सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स आर हैविंग फॉलोइंग दिस काइंड ऑफ ए फॉर्मेटिंग. जैसे एक काफ़ी सारा ब्लॉक्स होगा, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3. ओके, तो इन दिस कोर्स MES 133 यू हैव 3 ब्लॉक्स, ब्लॉक 1, 2, 3. फिर हर ब्लॉक के अंदर काफ़ी सारा यूनिट्स होगा. दैट मे बी 3 यूनिट समटाइम्स, इट मे बी 2 यूनिट समटाइम्स, इट कैन गो अप टू 4, 5 एक्सेट्रा. सो जैसे ब्लॉक 1 में देखिए, इफ यू गो डाउन, थोड़ा इसका आइडिया भी दिया होगा. देखिए ब्लॉक 1 कम्युनिकेशन प्रोसेस है, उसमें 2 यूनिट आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे. कम्युनिकेशन इन एजुकेशनल प्रोसेसेस, इंटरएक्टिविटी इन एजुकेशनल कम्युनिकेशन. सेकेंड ब्लॉक है सिलेक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें 4 यूनिट है, बट द नंबर इज सीरियली ऑर्डर्ड. ये यूनिट 2 है. बाकी ब्लॉक 2 में आ गया, फिर यूनिट 3 से शुरू होता है, यूनिट 6 तक जाता है. फिर ब्लॉक 3 में there are only 2 units, and this may not be the same structure of MES 131, M132, 134. This can be different. Sometimes in block 1 of MES 131 आपको और यूनिट मिलेगा, it can be 3 or 4. ब्लॉक 2 में 2 होगा, 3 होगा. So that depends on the course and the content load that we put into the self learning materials. Okay, this अभी देखिए कम्युनिकेशन. तो बेसिकली कम्युनिकेशन वी डू एवरी, आई मीन लाइक इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कम्युनिकेशन नहीं होता है. हाउ वी विल ट्रांसैक्ट द कंटेंट टू द स्टूडेंट्स और टीचिंग, जो रेस्पेक्टिव ऑफ द स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन, यही होता है कम्युनिकेशन. बट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, काफ़ी सारे टेक्नोलॉजिकल टूल्स आ गया, टेक्नोलॉजीज, मोबाइल ऐप्स, काफ़ी सारे और भी apps are guess, then how we will use such technologies for our educational purposes. थोड़ा बहुत theory भी इसमें डिस्कस किया होगा और कुछ टेक्नोलॉजी टूल्स भी इसमें इंट्रोड्यूस किया होगा. आप वो आपको भी जानते होंगे, जैसे है ना, वन ऑफ द टूल्स विच वी हैव डिस्कस्ड इज द ईमेल. ईमेल इज वन ऑफ द टूल्स विच वी यूज. वो तो काफ़ी पहले से भी यूज कर रहे हैं, है ना. बट there are many such tools which we can use to reach out to your students for disseminating the general information. फिर साथ साथ जो टीचिंग कंटेंट है वो भी हमको कम्युनिकेट कर सकता है, जैसे टेक्नोलॉजी माध्यम. वो व्हाट्सअप तो बहुत कॉमन हो गया, और भी काफ़ी सारा टूल्स हैं. ओके, सो दैट इज द बेसिक आइडिया. नाउ इंटरएक्टिविटी इज अनदर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इन कम्युनिकेशन, क्योंकि इंटरएक्टिविटी तो क्या काफ़ी सारा when there is what we say growth in the MOOC और ऑनलाइन कोर्सेस, इसका भी काफ़ी इम्पोर्टेंस हो गया. जो इंटरएक्टिविटी, कैसे इंटरएक्टिविटी बना लेंगे हमारे जो कम्युनिकेशन प्रोसेस. तो इंटरएक्टिविटी क्या होता है, जैसे इंटरएक्टिव, देखो इंटरएक्टिव सर आपने लिंक भेजा हुआ है डिस्कशन फोरम का, तो डिस्कशन फोरम का लिंक क्या है, वो एक इंटरेक्टिविटी हम कर पा रहे हैं आपके साथ और आपस में भी के साथ में. एग्जाम्पल है. बिल्कुल बिल्कुल. आजकल आप ये भी सुनाओगे, जैसे वी आर मेकिंग दी टेक्स्ट, ये तो एक नॉर्मल हार्ड कॉपी टेक्स्ट जैसे, ये तो सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में है, बट पीपल हैव स्टार्टेड मेकिंग, स्पेशली इफ यू सी दी ऑनलाइन कोर्सेस एंड ऑल, काफ़ी सारा टेक्स्ट मटेरियल, इंटरैक्टिव टेक्स्ट मटेरियल हो गए. तो इसको हम बोलते हैं इंटरैक्टिव ई टेक्स्ट. ये तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है, तो इसको लिए इसलिए इसको हम इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट भी बोलते हैं. सो दैट्स व्हाई we are focusing on interactive e text. तो see what happens, interactivity कैसे होता है, when there are two people in communication, if one man communicates with the other, जैसे if one man communicates with the other, एक मैं इसको स्लाइड शो में मोड,
है ना। जैसे दिस इज आई मीन लाइक वी कॉल इट एज सेंडर, देन देयर इज समबडी कॉल्ड अनदर मैन और whoever it is, उसको हम रिसीवर बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन यूजुअली इट इज फ्रॉम, इफ इट इज ए क्लासरूम टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, काफी सारा हमारे जो मटेरियल वैसे ही डिस्कस किया होगा, जैसे टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन। तो यूजुअली टीचर्स सेंडर्स होता है, दे विल डिसेमिनेट द इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट्स आर द रिसीवर्स, है ना, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो यूजुअली इंफॉर्मेशन फ्लो वैसे ही होता है, फ्रॉम टीचर्स टू स्टूडेंट्स, टीचर्स टू स्टूडेंट्स। एक मिनट, टीचर्स टू स्टूडेंट्स होता है। So when, if in the communication, if the information flows from only one end to the other end, if it keeps on flowing from one end to the other, usually it happens, जैसे काफी सारे लेक्चर मेथड में या लेक्चर स्टाइल ऑफ में इस तरह का इंफॉर्मेशन फ्लो ही होता है, the teacher keeps on lecturing, but there are opposite cases also, sometimes the students also interact. So if the information keeps on flowing from one end to the other end, we do not call it as an interactive communication. When the students also ask questions, when the students also interact, then such communication we call it as interactive communication. This is the basic idea, which थोड़ा बहुत आपको भी आइडिया होगा। देखिए, तो मैं यही बोल रहा था, जैसे दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट बट वी डजंट कंसिडर दिस एज एन इंटरैक्टिव ई टेक्स्ट, क्योंकि द इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल ऑन दिस text, the readers can only read and get the idea. The students are not having any chance to interact, give information to this text. जो भी इसको पढ़ता है उसको तो कोई चांस ही नहीं है जैसे इसको इंफॉर्मेशन ये जो टेक्स्ट को देने के लिए। बट देयर आर सिचुएशंस, देयर आर टेक्स्ट which are prepared in such way. Maybe you can see this in this course MES 133. At some point you might have seen there are QR codes. That is one of the ways of bringing interactivity. So if you see some QR code in this text, you are also giving some input to the text that way. Okay, information from your side in the form of electronic signals या जो भी जो computer terminology में हो, that way it flows. So the information you are also getting, you are also passing some information to the text. If you are, if the text material has given some website link, then to activate, to see that website link, you have to pass some information to the text. So when the information flows from the text to the receiver, and from, if some information flows from the receiver to the text, वो टेक्स्ट को हम इंटरैक्टिव ई टेक्स्ट बोलता है। तो आजकल आप देखा होगा काफी सारे टेक्स्ट क्यूआर कोड एम्बेड करके आता है, हाइपरलिंक देके आता है, पहले से भी इस तरह का प्रोविजन नहीं था। तो फिर हम कैसे इंटरैक्टिविटी इंप्रूव करेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में? इट शुड नॉट बी ए वन साइडेड काइंड ऑफ ए डाटा प्रेजेंटेशन, इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन। तो वो बेसिकली दैट इज द आइडिया ऑफ दिस मॉड्यूल। जैसे हमारे जो इंटरैक्टिविटी इन कम्युनिकेशन, ओके, उसके क्या क्या टूल यूज के, जैसे जो विकास जी बोल रहे थे, जैसे ऑनलाइन कोर्सेस में सी द ब्यूटी, आई मीन लाइक वन ऑफ द फीचर्स ऑफ ऑनलाइन कोर्सेस इज टीचर्स आर नेवर into the classroom. Online courses में, see in IGNOU there are more than 40 plus complete online programs. It's a complete program, जैसे MBA program 2 साल का कोर्स है, उसमें कभी भी टीचर और स्टूडेंट मिलता ही नहीं है। ऑनलाइन कोर्स में कहाँ प्रोविजन है? देयर इज नो। इफ सम people, rarely people do that, teachers interact through some online conferencing tools and all, otherwise there is absolutely the absence of teacher student interaction. तो उसको फिर इंटरैक्टिव करना होगा जो ऑनलाइन कोर्सेस या रेगुलर कोर्सेस में, तो उसको हम कैसे बना लेंगे? तो इट इज the context, that is the context this unit is into this, okay, interactivity, क्योंकि आप in other units also you are studying about MOOCs, online courses and all in other courses, okay. फिर ब्लॉक 2 सिलेक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे सिलेक्शन कैसे, काफी सारे टेक्नोलॉजीज है बट यू कैनॉट। सर, हाँ बोलिए सर। सर मैं यहाँ पे कह रहा था कि जब इग्नू का मटेरियल है, जैसे आप डिस्प्ले कर रहे थे, तो उसमें हम देखते हैं कि बीच बीच में एक्टिविटी 1, थोड़े टेक्स्ट के बाद फिर एक्टिविटी 2, फिर लास्ट में कुछ क्वेश्चन रिफ्लेक्शन के लिए होते हैं, उसके बाद में फिर वो हम लास्ट में वो दे रखा होता है, चेक भी कर सकते हैं। तो ये प्रिंट रिच मटेरियल को कैसे इंटरेक्टिव बनाया जाता है, उसके एग्जांपल्स हैं।
तो जैसे मुझे लगता है जैसे बिल्कुल ये जो भले इसकी लिमिटेशन है, पर ये जो बीच बीच में एक्टिविटी और जो क्वेश्चन रिफ्लेक्शन के मौके दे रहे हैं, वो भी इंटरेक्टिविटी को मेंटेन रख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल आप बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं. दैट इज वन ऑफ द इंटेंशन. ओके, एक और इंटेंशन भी है, जैसे हम इन नॉर्मल क्लासरूम्स टीचर एंड स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम, जैसे टीचर कैन चेक वेदर द स्टूडेंट्स आर फॉलोइंग व्हाट द टीचर इज टीचिंग इन द क्लासरूम. वो तो नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है बच्चों से, तो बच्चों का रिस्पॉन्स से पता चलता है स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट द टीचर इज टीचिंग इन द क्लासरूम. लेकिन जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स में, जैसे मैंने बोला था, जो डिस्टेंस एजुकेशन में भी ये लिमिटेशन है, टीचर स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन नहीं है, तो दैट इंटरेक्शन इज ब्रॉट इनटू द सेल्फ लर्निंग मटेरियल. तो व्हाट एवर यू आर लर्निंग इन द सेल्फ लर्निंग मटेरियल, जैसे आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, फिर एज ए टीचर आई लाइक टू नो वेदर यू आर फॉलोइंग व्हाट यू हैव रेड इन द फर्स्ट पैराग्राफ. जैसे ये आपने ये पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, इफ इट इज अ क्लासरूम टीचर कैन आस्क, है ना, क्वेश्चन व्हाट कैन यू डिस्क्राइब द कम्युनिकेशन प्रोसेस. तो इसमें तो वैसे क्वेश्चन पूछने का प्रोविजन नहीं है. तो दैट आइडिया, द असेसमेंट पार्ट, उसको तो हम एजुकेशन में बोलता है फॉर्मेटिव असेसमेंट. तो दिस इज अ काइंड ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट. ये इतना सारा आपने पढ़ लिया, फिर आपको खुद भी चेक करना होगा वेदर यू हैव अंडरस्टूड व्हाट यू हैव लर्नड. तो इसके लिए हमने इधर क्वेश्चन डाला है चेक योर प्रोग्रेस, फिर आपको आंसर लिखने के लिए कुछ जगह भी दिया होगा, है ना. देन यू कैन ऑल्सो क्रॉस चेक व्हाट यू हैव रिटन हियर. तो वो क्रॉस चेक करने के लिए फिर अगेन इन द क्लासरूम टीचर्स कैन करेक्ट व्हाट यू आर सेइंग इन द क्लासरूम फॉर द टीचर्स क्वेश्चन. लेकिन इधर वो प्रोविजन नहीं है, तो आपको चेक करने के लिए फिर अगेन एट द एंड यू विल गेट द चेक योर प्रोग्रेस आंसर्स. तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिला, कुछ हिंट जैसे दिया है. पूरा आंसर कभी कभी देता है, कभी कभी पूरा आंसर भी नहीं देता है. only some hints will be given, like refer section 2.3. okay, sometimes the interactive answer will be given. this is one idea. जो आप बोले थे वो भी इंटरैक्टिविटी एलिमेंट का भी पर्पस है उसमें. तो so that is what is the interactivity. फिर यूजिंग OER इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसके ऊपर मैं थोड़ा बात करूंगा अभी. टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मैनेजिंग टेक्नोलॉजी मीडिएटेड लर्निंग स्पेसेस. क्लासरूम बोलते थे हम पहले, तो फिर ये टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन के बाद इसको थोड़ा बहुत सी ऑल दी स्पेसेस आर नाउ लर्निंग स्पेसेस. जैसे स्पेशली इन डिस्टेंट एजुकेशन एंड ऑल, when you travel in some buses or metro, or you go to some places where for attending some function, that space is also a learning space, है ना. whenever you get a material, I mean like a self learning material, ये हमारा लॉजिक ये भी है इग्नो का, जैसे ये काफी मोटा बुक आपको नहीं मिलेगा. पहले आजकल थोड़ा चेंज हो गया है, बट द आइडिया इज जितना भी इसको पतला कर सकता है, यू कैन कैरी एट एनी प्लेस, है ना. So when you travel in metro, you get some time, so you feel like I should learn now, तो आपको पढ़ सकता है. तो every space is now considered to be a learning space, not only the classroom, it has gone out of the classroom. तो इसके हिसाब से with that context we have included this managing technology mediated learning spaces. फिर assessment में क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं. तो दिस इज in total the structuring of this particular course MES 133. बाकी courses का अलग structuring है, but all these courses are interrelated. okay, तो अभी देखिए using OER in teaching learning process, इसके ऊपर मैं थोड़ा एक presentation भी अभी करूँगा, फिर हम इस क्लास को वाइंड अप करेंगे. देखिए why we are talking about OER. एक देखिए इसका ये जो काफी लेक्चर उसके ऊपर मैंने किया है, तो दिस इज वन ऑफ द स्लाइड्स मैं काफ़ी लेक्चर में यूज़ किया. देखिए कन्वेंशनल, इसको हम रेगुलर क्लासरूम बोलते हैं, ट्रेडिशनल क्लासरूम, फेस टू फेस क्लासरूम, जो भी हमारा वेयर टीचर एंड स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लासरूम टीचिंग लर्निंग सिचुएशन. तो टीचिंग के लिए, लर्निंग के लिए बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लासरूम, फेस टू फेस होता है. तो यही है हमारा जो कन्वेंशनल क्लासरूम. जो आप लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं, लेफ्ट साइड, ये सारा रेगुलर क्लासरूम का फीचर है ना. टीचिंग, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, टीचर एंड स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम टीचिंग. ओके, फिर ये मोस्ट ऑफ द टीचर्स डू असाइनमेंट, या होमवर्क भी बोलता है, कुछ होम असाइनमेंट भी बोलता है. दे गिव असाइनमेंट टू द स्टूडेंट्स.
इसका रेस्पॉन्सेस मोस्टली पेपर पेन मेथड ही यूज करता है ना, असाइनमेंट रेस्पॉन्सेस। तो ये हार्ड कॉपी फॉर्म में आ गया रेस्पॉन्स देने वाला जो उसका तरीका। बच्चों को हम क्लासरूम में डिस्कशन में भी एंगेज करता है। क्लासरूम विल मेक दम इनटू ग्रुप्स एंड मेक दम इनटू डिस्कस ऑन सम टॉपिक। तो इसका भी क्या फीचर है, द स्टूडेंट्स हैज टू बी फिजिकली प्रेजेंट इन द क्लासरूम, रेगुलर क्लासरूम में आता है। फिर एग्जाम भी कराता है। एग्जाम का भी फीचर है ये पेपर एंड पेन मोड ही है, पेपर एंड पेन मोड ही है, पेपर एंड पेन टाइप ऑफ नो। सो सी ये सारा लाइक इफ यू सी लाइक हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी है, वो मोस्टली लाइक हार्ड कॉपी फॉर्म में इसमें, हार्ड कॉपी फॉर्म। वी कैन नॉट एंटायरली से दैट दिस इज इन हार्ड कॉपी। जैसे टेस्ट रेस्पॉन्सेस या असाइनमेंट रेस्पॉन्सेस पेपर पेन यूज करते हैं तो हार्ड कॉपी फॉर्म में हो गया। अभी देखिए द क्वेश्चन इज कैन बी एंटायरली रेप्लिकेट, ये सारा हमको जो जितना भी कन्वेंशनल रेगुलर क्लासों में जो प्रोग्राम चलता है, कैन बी रेप्लिकेट द एंटायर प्रोसेस इनटू ए आईसीटी इंटीग्रेटेड क्लासरूम, या वी कैन कॉल वर्चुअल क्लासरूम या ई लर्निंग सिचुएशन। तो काफी सारा आईसीटी मीडिएटेड क्लासरूम ये सारा बोल सकता है। एंड द आंसर इज यस, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। आपको भी काफी सारा डेवलपमेंट आपको भी पता होगा, जैसे स्पेशली आफ्टर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑल्सो। तो क्या होता है हमारे जो टीचिंग के बाद इफ इट इज इन रेगुलर क्लासरूम टीचिंग वेयर टीचर एंड स्टूडेंट्स आर फिजिकली प्रेजेंट, इधर तो उसका जरूरी भी नहीं है, टीचर इज फिजिकली हैव टू बी प्रेजेंट एट प्लेस, बट टुगेदर इट इज नॉट नेसेसरी। ओके, तो टीचिंग फिर ऑनलाइन टीचिंग कन्वर्ट करके आएंगे इफ इट इज ए वर्चुअल क्लासरूम। ये कन्वेंशनल क्लासरूम है, ये वर्चुअल क्लासरूम है। बट द प्रॉब्लम विथ ऑनलाइन टीचिंग इज ऑनलाइन टीचिंग हर समय पॉसिबल नहीं है ना। आपको यू कैन गो टू स्कूल और कॉलेज एंड टीच द एंडर 360 264 डेज या जितना भी अपना एकेडमिक डेज है टीच कर सकता है। बट ऑनलाइन टीचिंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, टीचर्स को वैसे पढ़ा नहीं सकता है। तो क्या करता है, वी हैव टू फाइंड सम अल्टरनेट वेज ऑफ रीचिंग द कंटेंट टू द स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हम फिर डिजिटल रिसोर्सेस को ढूंढना होगा, डिजिटल रिसोर्सेस या इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस, जो भी आईसीटी मीडिएटेड रिसोर्सेस, आईसीटी रिसोर्सेस। तो वॉट एवर वी आर नॉट टीचिंग थ्रू द गूगल क्लासरूम और कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स, दैट वी विल कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ सम डिजिटल रिसोर्सेज। जैसे वीडियो बनाना होगा, ऑडियो रिसोर्सेस बना होगा, कुछ ग्राफिक्स देना होगा, कुछ इंटरैक्टिव टेक्स्ट बनाना होगा या टेक्स्ट मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट बनाना होगा, ये सभी करना होगा। ऑनलाइन टीचिंग इज नॉट पॉसिबल ऑल द टाइम, देयर आर मेनी रीजंस। कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होता है, बच्चों के पास डिजिटल डिवाइसेस का भी कमी है, तो ये सारा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए दूसरा तरीका है, वी विल form some create some digital resources and that will be given to the students। इधर भी असाइनमेंट देता है बट बच्चों को रिस्पॉन्सेस हार्ड कॉपी फॉर्म में नहीं होगा, they will prepare it in laptop, tablet, whatever digital devices, mobile device they have, and that is the electronic assignment। ऑनलाइन डिस्कशन जैसे बोल रहे थे विकास जी, डिस्कशन करने के लिए स्टूडेंट्स हैज टू बी फिजिकली प्रेजेंट इन ए कन्वेंशनल क्लासरूम, बट इधर तो वैसे जरूरी नहीं। यू कैन ऑल्सो, यू आर सिटिंग एट सम पॉइंट, आई एम सिटिंग इन दिल्ली, मेनी पीपल एट मेनी प्लेसेस, तो उसको फिर कुछ टेक्नोलॉजी यूज करना का, ये टेक्नोलॉजी का नाम है डिस्कशन फोरम। जैसे आपने बोला जी जो स्वयं कोर्सेस में डिस्कशन फोरम इज यूज, तो काफी मतलब यूज है उसका। द टीचर कैन डिस्कस ऑन द टॉपिक, बच्चों का कोई डाउट है तो दे कैन क्लियर द वे यू आर आस्किंग मी इन द बिगिनिंग, ये क्या करना है, उसको क्या करना है, इस तरह का डिस्कशन भी हमको डिस्कशन फोरम टेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट कोई हार्ड कॉपी पेपर पेन का वो नहीं है, इधर सारा ऑनलाइन होता है, दे कैन अटेंड एट एनी प्लेस। तो जो भी और है जो कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस में, वो वर्चुअल क्लासरूम में भी पॉसिबल है, एंड दैट्स व्हाई यू मे बी सीइंग मेनी यूनिवर्सिटीज आर कमिंग विथ ऑनलाइन कोर्सेस। स्वयं कोर्सेस आप शायद किया भी होगा, बट देर आर कंप्लीट ऑनलाइन कोर्सेस ऑल्सो, ऑनलाइन प्रोग्राम। जैसे मैंने बोल रहा था, जैसे इग्नो का 40+ ऑनलाइन प्रोग्राम्स है, MBA MA हिंदी है, काफ़ी सारा BA प्रोग्राम्स है, टूरिज्म का है, PG डिप्लोमा प्रोग्राम्स है। ओके,
So in IGNOU we have distance education programs also. It comes around 300 distance education. जैसे PGDET आपका distance education है, distance education. फिर ऑनलाइन प्रोग्राम्स 40 प्लस ऑनलाइन प्रोग्राम्स है, तो उसका तो पूरा ऑनलाइन वर्ल्ड में ही है उसका. दे हैव टू आई मीन लाइक लॉग इन सम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, फिर उस जितना भी असाइनमेंट उसमें जमा करना, टेस्ट भी उसका कुछ तरीका है. तो दिस इज हाउ द कंट्री इज ऑल्सो मूविंग, दिस इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग इन आवर कंट्री. तो देखिए द अदर पॉइंट इज, जैसे इफ यू आर अ टीचर एंड इफ यू आर प्लानिंग टू आई मीन लाइक, so now we are sure that we can also offer online programs, a complete program. So if you want to plan, if you want to, I mean like there are 2-3 ways of approaching that topic which I am going to discuss. देखिए one thing, जैसे मैंने बोला जैसे ऑनलाइन टीचिंग पॉसिबल नहीं है ऑल द टाइम, ठीक है. फिर आपको बच्चों को कुछ डिजिटल रिसोर्सेस देना होगा. आपको वीडियो दे सकता है, ऑडियो रिसोर्सेस दे सकता है, टेक्स्ट मटेरियल दे सकता है. बट ये देखिए ये सभी फिर टीचर बनाना होगा. टीचर्स हैव टू क्रिएट दिस, दे हैव टू डेवलप द वीडियो मटेरियल्स, ऑडियो मटेरियल्स या टेक्स्ट मटेरियल्स. बट teachers may not be all the time, may not be possible to develop, create these kind of resources. तो फिर दिक्कत होगा कैसे, फिर how we will make the students to learn the content. There is one way out. जैसे if you are finding difficult to create video resources, if you are finding difficult to create audio resources, if you are finding to create, if you are finding difficult to develop text materials, आपको फिर you have to depend on some digital resources which are available on the internet. फिर आप इंटरनेट ढूंढ के आप वीडियो रिसोर्सेस लेकर आना होगा, ऑडियो भी, टेक्स्ट मटेरियल भी. ओके, बट द प्रॉब्लम इज आपको वैसे नहीं लेकर आ सकता है. इफ यू आर इनटू टीचिंग फील्ड, आपको भी पता होगा देयर आर कॉपीराइट इश्यूज एसोसिएटेड विद दैट. कॉपीराइट ये किसी ने बनाया है, जैसे वीडियो किसी ने बनाया है, यू कैन नॉट टेक दैट मटेरियल विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ द क्रिएटर. जो भी बनाया उनसे आप परमिशन लेना ही जरूरी है. इट इज द सिमिलर विथ ऑल दिस रिसोर्सेस. किसी ने आप एक अच्छा टेक्स्ट मटेरियल आपको फील कर रहा है, दिस इज ए गुड टेक्स्ट मटेरियल आई कैन गिव टू माय स्टूडेंट्स, लेकिन हमको वैसे नहीं दे सकता है ना, कॉपीराइट इश्यूज, ये किसी और बनाया है तो वी हैव टू टेक परमिशन. बट ये जो टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के ये जो जमाना में क्या हो गया कि देयर आर मेनी मटेरियल्स व्हिच आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट व्हिच वी कैन टेक फ्रीली विदाउट टेकिंग द परमिशन. That's why we call it as the digital resources are made open. And digital resources are made open. Anybody who wish to use that can use without taking the permission. जैसे if you find this PPT, the PPT which I am showing today, if you find this PPT in anywhere in the internet, you can take that material without asking my permission. But उसको लेने के लिए कुछ और भी हम देखना होगा. ओके, दैट आई विल डिस्कस लिटिल लेटर. ओके, तो इसको हम ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस बोलता है. द मटेरियल्स व्हिच आर फ्रीली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, दैट इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन. उसका डेफिनेशन कुछ और है. ओके, सो देयर आर मटेरियल्स व्हिच आर फ्रीली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट व्हिच एनीबॉडी कैन यूज विदाउट टेकिंग द परमिशन. तो इसका ब्यूटी क्या है, देखिए इफ यू सी द स्वयं वेबसाइट, उसमें काफी सारा स्वयं कोर्सेस है विच दे हैव प्योरली मेड आउट ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस. उन्होंने कुछ भी बनाया नहीं, वीडियो बनाया नहीं, ऑडियो बनाया नहीं, टेक्स्ट भी बनाया नहीं. दे हैव कंपाइल्ड, टेकन मटेरियल्स फ्रॉम द इंटरनेट, बट द मटेरियल दैट दे हैव टेकन इज ओपन एजुकेशन रिसोर्स. कोई दिक्कत नहीं, आपको यूज कर सकता है इसको, जो भी आपको कर सकते हैं सारा कर सकता है. बट देयर आर लिमिटेशन दैट वी विल सी अगेन. ओके, तो इसलिए हमारा जो रोल ऐसे बन गया. देखिए नाउ, देखिए हम तो फेस टू फेस टीचर हैं, वी आर गोइंग टू कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्कूल, टीचर बच्चों के साथ हम तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एंगेज होता है. बट इफ यू आर आई मीन लाइक बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, आपको तो कुछ टेक्नोलॉजी रिसोर्सेस भी बनाना होगा ना. अदरवाइज इफ यू आर ऑफरिंग एनी ऑनलाइन कोर्सेस थ्रू स्वयं प्लेटफॉर्म और एनी अदर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, आपको तो फिर ई टीचर भी बनना होगा, हमारे एक ई वर्चुअल इमेज भी होगा. तो वी विल क्रिएट e-content digital resources, ICT resources
If it is difficult for any teacher, what they will do, they will collect the materials. एक technical term है curation. तो we will curate, we will collect the curation, मतलब जो suitable content हम ले लेंगे. We will collect only the suitable content which is required for our student. जैसे for example, if you are teaching 9th class students, जो भी text material available है, that will not be suitable for 9th class students. So we will collect only the materials which are suitable for 9th class students. तो वो प्रोसेस को हम टेक्निकली क्यूरेशन बोलता है. तो वी हैव टू इधर क्रिएट या वी हैव टू कलेक्ट और क्यूरेट ये रिसोर्सेस. तो ये इस तरह के एक रोल चेंज हमारा ऊपर है. ई कंटेंट है ना, ई कंटेंट देखिए, तो ये काफी सारा है. ये सारा ई कंटेंट है जो एनसीईआरटी का एक क्लासिफिकेशन है एनसीईआरटी का. इसमें सारा हम यूज करता नहीं. वी यूजुअली यूज वीडियोस, समटाइम्स है ना, टेक्स्ट डेफिनेटली वी विल यूज ई टेक्स्ट, फिर ऑडियो कभी कभी यूज करता है. बट दीज आर टू रिसोर्सेस विच वी यूजुअली पॉपुलरली सी इन एनी ऑनलाइन कोर्स. वीडियो रिसोर्सेस, टेक्स्ट मटेरियल बाकी भी आपको मिलेंगे, जैसे ग्राफिक्स, इमेज, समटाइम्स पिक्चर्स, ग्राफिक्स वी यूज टू सी, विजुअल ग्राफ्स एक्सेट्रा, सिमुलेशन, एनिमेशन कभी कभी हम देखते हैं. ओके, PowerPoint presentations. So that is something related to, जैसे जो आप if you have done any MOOC course from the स्वयं platform, स्वयं से आप किया तो फिर आपको इसको आइडिया होगा. जैसे 4 quadrant अप्रोच, उनका टीचिंग स्टाइल 4 quadrant अप्रोच है. जैसे इफ यू हैव डन एनी कोर्स, आप तो काफी वीडियोस देखा हुआ है. एनी कोर्स के साथ दे अपलोड द मटेरियल्स वीक वाइज. सो वीक 1 में आपको वीडियो मटेरियल मिलेगा मोस्टली, फिर एक सेल्फ लर्निंग मटेरियल अपने आप पढ़ने के लिए एक सेल्फ लर्निंग मटेरियल आपको मिलेगा, या ई बुक मिलेगा, कभी कभी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन मिलेगा, कभी कभी ओईआर मिलेगा ना, ओईआर. तो ये तीनों नहीं है तो फिर आपको जरूर ओईआर मिलेगा, सम मटेरियल्स डेवलप्ड बाय समबडी एल्स. फिर ये तो डिस्कशन फोरम ने डिस्कस किया. फिर ये तो असेसमेंट रिलेटेड है. तो आप when you are planning to offer any course through online, or if you are planning to put your course materials into some learning management system, maybe it is up to you as a course coordinator. Otherwise you can also follow this approach, 4 quadrant approach. This is the pattern of Swayam MOOC courses. In there are many other MOOC platforms like edX, Coursera, etc. Their pattern may be something different. Okay, but in most of the MOOC courses you will be finding video programs and reading materials, self learning materials. तो OER मैंने थोड़ा आइडिया आपको दिया था, ओपन एजुकेशन रिसोर्स. छोटा सा देखिए, एक डेफिनेशन देखिए. टीचिंग, लर्निंग एंड रिसर्च मटेरियल्स इन एनी मीडियम, डिजिटल और अदरवाइज, that reside in the public domain in the internet or have been released under an open license that permits non-cost access, use, adaptation, redistribution by others with no or limited restriction. तो मोस्टली ये तो एनी मीडियम मतलब डिजिटल मीडियम मोस्टली है. ओके, नॉन डिजिटल भी है बट दैट इज रेयर केस, क्योंकि आजकल सारा तो डिजिटली हो गया. तो इफ यू फाइंड एनी टेक्स्ट मटेरियल एज OER, उसका दूसरा क्राइटेरिया ये है, उसके साथ एक ओपन लाइसेंस भी होगा. ओपन लाइसेंस है ना, ओपन लाइसेंस. दिस विल बी इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट, सॉफ्ट कॉपी फॉर्म है ना, डिजिटल फॉर्म. उसके साथ आप एक ओपन लाइसेंस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, ओपन लाइसेंस. तो इफ यू फाइंड एनी डिजिटल मटेरियल लाइक वीडियोस, ऑडियोस, एनिमेशंस, ग्राफिक्स विथ एन ओपन लाइसेंस, then that is considered to be an open education resource. क्या इसका यूज है? You can take that material, use it for your teaching learning purpose. The other thing is you don't have to take permission, but how you will use that material, that depends upon the license category which is attached to that. Say for example, if the open license says you can make money out of this material, आपने कोई text material देखा which is OER, which is running for some 500 pages है ना, OER 500 pages का आपने एक OER देखा, text में ये complete text book है. Okay, you feel like you want to sell, if you want, I mean like you photocopy that, then you
give to somebody, you collect money, then you are making money out of that material. तो वो भी possible है. But that we have to see whether that license allows for doing that, the license. Okay, license. तो थोड़ा बहुत देखता हूँ license. Open license तो one of the criteria है. तो आप देखिए देखते होंगे जैसे popular license used is Creative Commons license. This is a company based at US. Okay, Creative Commons. So this organization's license is popularly used across the open education resources. Creative Commons license, CC, जो CC आपको मिलेगा Creative Commons. This is an organization. Okay, तो ये क्या क्या कर सकता है, आपको यूज कर सकता है, आपको मॉडिफाई कर सकता है, अडेप्ट कर सकता है, शेयर कर सकता है, रिमिक्स कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है. देखिए these are the licenses which you see mostly. आप कहीं देखा है इस लाइसेंस इस तरह का मटेरियल, कहीं देखा आप इसमें? एनसीईआरटी का देखा है, एनसीईआरटी के मटेरियल्स में, वीडियोज में, उनमें एक शुरू में लाइसेंस होता है. यूट्यूब पे जो वीडियो होती है फिल्टर करके हम निकाल सकते हैं. ओके, या और कहीं तो काफी सारा है. जैसे दिस सी द मटेरियल विच यू आर सीइंग ऑन इग्यान कोर्स, जैसे हमारे इग्नो का, दिस इज नॉट एन ओपन एजुकेशन रिसोर्सेस. व्हाट आई मीन टू से इज, इसको तो आपको फोटोकॉपी करके इफ यू वांट टू मेक मनी, don't take that way, na? If somebody, I mean, like some people do that, but that is legally not I mean, like permitted. This is not an OER. This material is made open for the public use. IGNO has made the entire self-learning materials of IGNO. जितना भी self-learning material IGNO का सारा इसमें available है. But this is not an open educational resource. The copyright is with IGNO only. If you want to use this, if you want to take any material, any sentence from IGNO's material, you have to definitely quote IGNO. This is IGNO's material. You have to acknowledge the contributor. Okay. What I am saying is the materials which you are seeing on eGAN course, they are not open education resources, but the materials which you are seeing on NROER, वो पहला उसका नाम वही था, NROER जो बोल रहे थे, जो NCERT का नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेस. अभी तो ई पाठशाला ऐसे कुछ हो गया. पहले NROER था, अभी तो ई पाठशाला हो गया. So the textbook, some of the materials available, videos, they are open education resources. Okay. तो ये हो गया लाइसेंस. देखिए सिंबल है ना, सिंबल. See, you will find some human being, then there is something like this circle, and inside a C, then there is some equal symbol. This is the dollar symbol which is crossed. Now this is the dollar symbol which is crossed. तो इसमें थोड़ा बहुत आपका आइडिया मिलेगा ना. ये देखिए, दिस इज शेयर अलाइक. ये सिंबल को हम बोलते हैं, दिस सिंबल इज नोन एज एट्रीब्यूशन. एट्रीब्यूशन मतलब आप किसी टेक्स्ट मटेरियल में इफ यू आर सीइंग दिस सिंबल ओनली, you can use that without taking the permission of the creator, but you have to definitely attribute them, you have to acknowledge them, you have to quote his name, I have taken from so and so. और जो हम इन टेक्स्ट साइटेशन करते हैं ना, उस तरह आपको उसका नाम देना होगा. तो ये सिंबल आप कहीं देखेगा तो फिर आपको उसको, if you are using, if you are making a new paper out of that material, आपको तो उसको फिर I mean definitely you have to acknowledge them. Now you have to give credit to the creator. So that's what this symbol represent. ये सिंबल देखिए, this is share alike. आपने कहीं एक टेक्स्ट मटेरियल देखा, एक मिनट, कई टेक्स्ट मटेरियल आपने देखा, एक टेक्स्ट मटेरियल कोई 10 पेजेस का टेक्स्ट में, उसके साथ ये सिंबल है ना. तो it is sure that this is an OER. This text material is an OER. है ना. You can use this. इसमें 10 pages हैं, 10 pages. Okay. And out of 10 pages, you are taking only 2 pages. And you are planning to put these pages into the internet. When you are putting this into the internet, you have to definitely give this symbol, share alike. Now, if you are seeing this symbol like 10-page document, you are making a new document, only 2 pages you are taking, you are putting your name, but you have to
give this symbol only to this 2-page document. This is what a share alike means. How was the license? The same license you have to give. Okay, share alike. ये नॉन डेरिवेटिव, देखिए नॉन डेरिवेटिव आप जैसे आपने एक 10 पेजेस का डॉक्यूमेंट देखा, उसका सिंबल यही था. You are making a 2-page document which is not legally permitted that way if this is the symbol. आपको तो इसको नॉन डेरिवेटिव, इसको तो आपको कुछ नहीं कर सकता है, आपको यूज कर सकता है विदाउट टेकिंग एनी परमिशन, बट आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकता है. ओके, देखिए you can copy, distribute, display, performs only original copies of your work, which means basically you cannot alter, you cannot कुछ भी चेंज आपको नहीं कर सकता. ये देखिए आपको डॉलर सिंबल क्रॉस करके देख रहे हैं, है ना. द सेम वे इफ देयर इज अ टेक्स्ट बुक हैविंग 500 पेजेस, जैसे मैंने पहले बोल रहा था 500 पेजेस का एक पूरा टेक्स्ट बुक है, you feel like it is a very good textbook. You are planning to make some 100 copies of this textbook by photocopying, and you will be selling and making money out of it. But this is not possible if you have this symbol with this textbook. Okay, this means that this is non commercial. आपको commercial purpose के लिए, basically money making purpose के लिए आपको इसको use नहीं कर सकता है basically. So friends, this is the basic idea of open education resources. देखिए, तो you will find this kind of licenses. देखिए, this is what I was saying in the beginning, है ना. attribution, एक ह्यूमन बीइंग का सिंबल आपको मिलेगा ना. so you will find open education resources with this only this license. इसको attribution CC by attribution non commercial, है ना. attribution non commercial, attribution share alike. तो ये ह्यूमन वाला सिंबल हर लाइसेंस में है, which means that you have to definitely quote the name of the creator, whatever material. If you are having a video, if you are using that video, definitely you have to mention this video is adapted, this video is made by remixing so and so. So that way you have to definitely acknowledge or give your credit to the new material that you are creating. तो थोड़ा इसका इंटेंसिटी वैसे बढ़ता जा रहा है ना. इसको आप सेल्फ कमर्शियल पर्पस के लिए भी नहीं यूज कर सकते, बट इफ यू आर मेकिंग एनी मटेरियल लाइक दिस, if you have these kind of a symbols, the new material that you have developed should also have this license. उसको आपको फिर नहीं चेंज कर सकता है क्योंकि इसको तो शेयर अलाइक है, शेयर अलाइक. So these are the major 6 licenses which we see in open education resources. I also used to, I mean like some of, I'll just show you some of my जैसे देखिए, if you go to this is the, see if you go to the Google, है ना. I'll just search for some images, car. Okay, images, I'll take images. This is one of the way of getting, है ना. कभी कभी when we are writing any text material, thesis या research paper, we used to take sometimes images from the Google or any search engine. तो what I mean like trying to convince is, ये तो थोड़ा बहुत आपको भी आइडिया होगा, जैसे we cannot take images from Google like that, क्योंकि ये सारा कॉपीराइट मटेरियल है. इवन इफ इट इज नॉट मेंशन, ये तो बिल्कुल कॉपीराइट है, ये हमारा क्रिएशन नहीं है, किसी ने किसी और बनाया है, वो तो इंटरनेट में डाला हुआ है. ओके, वॉट एवर देयर इंटेंशन वुड बी, ओके, उसको तो हमको कोई लेना देना नहीं है. वी कैनॉट टेक दैट बिकॉज दिस इज नॉट आवर क्रिएशन. तो मुझे तो कुछ कार का इमेज चाहिए, तो मैंने गूगल इमेज में देखा, तो ये सारा जैसे आई वाज सेइंग, ये सारा कॉपीराइटेड इमेजेस है. तो टू गेट सम ओपन एजुकेशनल इमेजेस, आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस टूल्स, है ना, टूल्स. फिर आपको ये नीचे इस तरह के एक लाइन आएगा, इसमें यूसेज राइट होगा, यूसेज राइट. देखिए, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस, इसलिए मैंने बोला था जो OER के साथ जो लाइसेंस आता है वो क्रिएटिव कॉमन्स ऑर्गेनाइजेशन का लाइसेंस है.
जो 6 लाइसेंस विच आई वाज शोइंग। तो इसको आप क्लिक करेंगे, देन दिस पेज विल बी रिफ्रेश्ड, कोई नया इमेजेस आएगा, दैट विल बी मोस्टली क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस्ड इमेजेस। देखिए आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस, इट इज गेटिंग रिफ्रेश, है ना। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस इमेज, तो थोड़ा बहुत इसका लाइसेंस डिटेल्स मिलेगा आपको। देखिए पिक्साब है, लाइसेंस डिटेल्स। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस लाइसेंस डिटेल्स, देखिए इट विल गो टू द क्रिएटिव कॉमन्स वेबसाइट। ऐसा ही वो सेइंग, ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है ना, एकेडमी पर्पस का इंस्टीट्यूशन है क्रिएटिव कॉमन्स। तो दिस मीन्स दैट दिस इज ए व्हाट वी से क्रिएटिव कॉमन्स image, this one. So the same way you can see all the images which are appearing. This is one way. जैसे if you want to get any text material, थोड़ा difficult है, फिर भी आपको थोड़ा idea मिलेगी। जैसे I want to get a material on ICT. What is ICT? What is ICT? I am looking for some text material. I'll click on all. It was here in images. तो व्हाट इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये व्हेन यू क्लिक ऑन दैट आपको फिर कुछ टेक्स्ट मटेरियल मिलेगा, है ना, किसी ने बनाया है, दे हैव पुट इट ऑन द इंटरनेट, एज आई सेड व्हाटएवर देयर इंटेंशन बी। लेकिन हमारा पर्पस के लिए ये यूज नहीं कर सकता है क्योंकि ये कॉपीराइटेड मटेरियल, इवन इफ इट इज नॉट मेंशन। तो थोड़ा बहुत जो क्रिएटिव कॉमन्स वाला मटेरियल मिलने के लिए व्हाट वी विल डू यूजुअली, ये जो इधर है, जस्ट गो बैक, है ना। फिर आपको एक मोर अबाउट सेटिंग्स में देखता हूँ। देखता हूँ कहीं एक एडवांस्ड सर्च का ऑप्शन है इधर, आपको कहीं दिख रहा है इधर एडवांस सर्च? सी ऑल सर्च सेटिंग्स, एक बार इसमें देखता हूँ। ये थोड़ा मैं टाइम लेता हूँ, ठीक है, ये बाद में आ जाऊंगा मैं, अभी आई कैन नॉट लोकेट वेयर इट इज। आई जस्ट कम बैक टू दिस बाय टेकिंग सम टाइम। Okay, sir. Meanwhile I'll just go to the other one which somebody was saying। जैसे अभी देख लो, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, व्हाट इज आईसीटी, ठीक है, व्हाट इज आईसीटी। फिर हम कोई वीडियो भी देखता हूँ, वीडियो, इसमें वीडियोस, ओके। तो जैसे जितना भी वीडियो सारा आ जाएगा, है ना, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस वीडियो इट विल टेक यू टू यूट्यूब। ये तो गूगल का ही है यूट्यूब, है ना, इधर कहीं होगा वीडियो, ओके। वी विल नॉट गो दैट वे, व्हाट वी विल डू द अदर वे इज, जैसे आपको YouTube is the largest that way, what we say, the video repository, YouTube directly I will go to YouTube, YouTube, so I'll search here what is ICT, I'll click the enter button, see what is ICT। जो जितना भी ICT रिलेटेड जो भी वीडियो बनाया वो सारा इधर आ जाएगा। बट एज आई सेड अगेन, दिस इज समबडी एल्स क्रिएशन, आपको तो वैसे यूज नहीं कर सकता, बट पीपल यूज, है ना, पीपल डोंट गेट इनटू टू मच दैट वे कॉपीराइट इश्यूज, बट लीगली इट इज नॉट permissible, even you cannot download also। तो I would look for some creative commons license attached YouTube videos। तो इसके लिए हम फिल्टर को क्लिक करेंगे, फिल्टर, है ना, फिल्टर। तो अभी फिर आप इधर आ जाइए, जैसे यू विल गिव इन फीचर्स लाइव 4K HD सबटाइटल क्रिएटिव कॉमन्स, है ना। सो यू विल क्लिक ऑन क्रिएटिव कॉमन्स। सो इसको दोबारा इसको रिफ्रेश करके क्रिएटिव कॉमन्स वीडियोस आ जाएगा, बाकी भी होगा,
लेकिन मोस्टली द वीडियोस विच यू आर सीइंग राइट नाउ इज क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस्ड वीडियोस। आप कैसे देखोगे इसको? आई जस्ट ओपन दिस वीडियो, है ना। ओके, द वीडियो इज प्लेइंग। आप इसको नीचे नीचे आ जाइए, देखिए लाइसेंस लिखा होगा इधर, लाइसेंस ना, क्रिएटिव कॉमन्स रीयूज अलाउड। तो दिस इज क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस वीडियोस। तो इसको आपको यूज कर सकता है, इसको एडिट कर सकता है, इसमें से कुछ पोर्शन आपको लेकर आपको नया वीडियो बना सकता है। दिस इज व्हाट वी कॉल रिमिक्सिंग, रीयूजिंग, अडैप्टिंग। तो आपको जैसे आपको बच्चों के हिसाब से आपको इसको तो सारा मॉडिफाई करके डाउनलोड करके आपको बना सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द वेज ऑफ फाइंडिंग दैट वे। ओके, दिस आई कैनॉट लोकेट the text material. Okay, text even otherwise it is little difficult that way. Okay, so if you see the commonwealth of learning, ना, commonwealth of learning, इसका काफी सारा मटेरियल्स है वैसे। just look for some material who we are, skills, रिसोर्सेस। एक बार इसको देखता हूँ, ओपन एक्सेस रेपोजिटरी, है ना। ये देखिए ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन फॉर क्लाइमेट, है ना, डाउनलोड। इसको डाउनलोड करके देखता हूँ इसमें क्या लाइसेंस अटैच किया है। तो इट्स नॉट ओनली समटाइम्स ए सिंगल पेज, कभी कभी ये पूरा बुक की, जैसे एक कॉमन बुक है टोनी बेट्स का, टोनी बेट्स ऑनलाइन लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन। just trying to locate that. Okay, Tony Bates, technology in digital age। देखता हूँ इसमें है टीचिंग इन डिजिटल एज। ये देखिए टीचिंग इन डिजिटल एज, है ना। ये कंप्लीट बुक है, सम 500 पेजेस का बुक है, बढ़िया बुक है, टीचिंग इन डिजिटल एज। काफी सारे इसमें डिस्कस किया है। टीचिंग इन डिजिटल सेकेंड एडिशन वाज पब्लिश। ये देखिए पूरा बुक के लाइसेंस है, क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन नॉन कमर्शियल, जैसे हमने इधर देखा था, है ना। क्रिएटिव कॉमन्स नॉन कमर्शियल एट्रीब्यूशन क्या था इधर, सीसी एट्रीब्यूशन नॉन कमर्शियल। तो इसमें आपको मिलेगा वो लाइसेंस, सीसी एट्रीब्यूशन नॉन कमर्शियल, यही है, सीसी एट्रीब्यूशन नॉन कमर्शियल, ये लाइसेंस है। which means that this is a complete entire book. Okay, we were not having such kind of facilities, I mean like some years back। आजकल क्या है, पूरा ऑनलाइन ही कर दिया। people are putting the materials, the entire book on the internet, but some people are making it creative commons books also, open OER। so if you want to download this book, you can click here, you can download, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि this is already an OER, this is the license। and you see the what we say, the dollar symbol crossed, so you cannot photocopy and sell it and make money, that is one way। or for any other commercial purposes you cannot use this material, but you can read, you will get this entire book from the internet। काफी सारा वैसा है, ठीक है। तो आई एम जस्ट स्टॉपिंग, लेट मी सी दिस स्लाइड, आई विल शेयर विथ यू। ओके, तो टाइप्स ऑफ ओईआर से ये सारा हमारा जो यूनिट में भी डिस्कस किया, जैसे लाइसेंस बेस्ड है, अभी तो हमने लाइसेंस देखा है, जैसे वीडियो ओईआर है, ऑडियो ओईआर है, ग्राफिक इमेजेस है, जैसे आई हैव क्रिएटेड कपल ऑफ ओईआर इमेजेस आल्सो। कभी कभी जो
see if it is. See, when I made this OER, you can see. See, this is one of the graph images which I have developed. Okay, जैसे क्यूसिंग एंड टेस्टिंग टूल्स है, जो क्यूस के लिए टेस्ट बनाने के लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जो इंटरनेट में अवेलेबल है, क्या क्या कौन सा सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना होगा, ये कोई कॉन्सेप्ट मैपिंग सॉफ्टवेयर यूज करके बनाया है. See, when I made this, I have also tried to attach this OER image. देखिए, CC by share alike. So if you want to use this, if it is available, this is available on the internet. Okay, if you want to use this, you can use, but you have to give my name. 2018 में बनाया है. आप जो बनाता है जो नया मटेरियल, उसको सेम लाइसेंस आप देना होगा, बिकॉज CC बाई शेयर अलाइक लाइसेंस है. तो दिस इज द आइडिया. तो मीडिया टाइप है, क्वालिटी, कभी कभी 2-3 फैकल्टी टीचर्स बना, मतलब ज्वाइनली मेक OERs. वो जो क्वालिटी क्या क्वालिटी के लिए, क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए दे गेट इट पीयर रिव्यूड, तो उस तरह का भी बनाता है. ऑथरशिप, ए सिंगल मैन डेवलपिंग, 2-3 पीपल ज्वाइनली डेवलपिंग, तो ऑथरशिप स्टाइल बेस्ड भी OERs है. क्या क्या कर सकता है, इसको मिक्स कर सकता है, अडेप्ट कर सकते हैं. असेट एक्सट्रैक्शन, उसमें कुछ पोर्शन आपको निकाल सकता है. तो दैट वे दिस इज हाउ इट इज यूज्ड. हाउ यू विल क्रिएट, आप बना लो कोई, जैसे मैंने एक सिंपल आइडिया आपको बना एक्सप्लेन किया, जैसे दिस इज एन इमेज क्रिएटेड बाय माई सेल्फ, फिर मैंने ये लाइसेंस आप मैंने अटैच किया है. इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द लाइसेंस विच यू आर गोइंग टू अटैच आपको, तो फिर ये क्रिएटिव कॉमन्स का वेबसाइट में आपको जा सकता है. क्रिएटिव कॉमन्स है ना. शेयर योर वर्क, देखिए शेयर योर वर्क को आप क्लिक करो, फिर आप देखिए इसमें से गेट स्टार्टेड ना. आप allow adaptation, whether you are allowing to remix that, change that, modify that. if you are planning then yes कर लो. allow commercial use, आपको इसको commercially use करना है तो whether you are willing to do that, नहीं तो आपको no select करना ना. see, when I am selecting the no, the license changes. when I am selecting no here, again the license will change. तो उस तरह का लाइसेंस आपको बना के आ जाएगा. इसको सिर्फ आप कॉपी करो, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज, फिर आपका जो बनाता है मटेरियल उसमें आप अटैच करना. मैं जैसे बनाते समय काफी सारा मेरा पावर पॉइंट वीडियोस, मैं OER वीडियो से ही बनाया है. somewhere it is available. Okay. तो मे बी विद दिस आई जस्ट कंक्लूड. तो काफी सारा वेबसाइट है जहां जहां ये अवेलेबल है. ओके, एक तो पिक्साबे है. इफ यू वांट सम इमेजेस, आपको पिक्साबे वेबसाइट में जा सकता है. पिक्साबे जो जितना भी अवेलेबल है, सारा रॉयल्टी फ्री इमेजेस है, कोई कॉपीराइट इश्यूज नहीं है इसमें. तो जो भी जो इमेजेस विच यू आर सीइंग इन माय पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग इज टेकन फ्रॉम पिक्साबे. ये सारा रिपोजिटरी है. दिस इज नॉट एन OER रिपोजिटरी, मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ. जैसे दिस इज इग्नोस ओपन रिपोजिटरी, बट दिस इज नॉट OER. आप स्वयं प्रभा चैनल देखिए, काफी सारे वीडियोस अवेलेबल है, वो सारा OER वीडियोस है. नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, उधर भी आपको काफी सारा टेक्स्ट मटेरियल्स वीडियोस मिलेगा. मेनी आर OER videos. So I was trying to give you some basic idea about what is OER. OER is nothing but they are digital materials which are having a license attached to it that can be used, reused, whatever you like. ठीक है, फिर मैं इधर स्टॉप करता हूँ. और कुछ आपका कुछ क्वेरी है तो वो डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वी विल स्टॉप. और कुछ आप OER के ऊपर आपको कुछ आइडिया शेयर करना तो वो भी, दैट इज आल्सो वेलकम. आई जस्ट स्टॉप दिस प्रेजेंटेशन. बोलिए. This is only printing medium, sir.
this is OER नहीं, and कुछ भी हो सकता है, कोई भी डिजिटल मटेरियल हो सकता है, जैसे टेक्स्ट मटेरियल हो सकता है, वीडियो हो सकता है, इमेजेस हो सकता है, पावर पॉइंट हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, एनिमेशन हो सकता है, जो भी, there is no limit to that. Any form of digital material you can make if you like to, use by the public. okay. आपको make it OER, शेयर करो कहीं आपका वेबसाइट में, या आपका यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन का वेबसाइट में, या आपका कोई सोशल मीडिया हैंडल में, कहीं भी आपको शेयर कर सकता है। Okay. और कुछ शेयर करना है मणिक जी, विकास जी, अंजलि जी? वैसे बेसिकली व्हाट आर यू पीपल इनटू? सर मुझे एक सवाल पूछना था। ये अगर ओपन सोर्सेज हैं तो उसमें लाइसेंस का फिर क्या यूजफुलनेस हुआ? अगर सब कुछ शेयर ही कर पा रहा है, एडिट कर पा रहा है, मेक मनी भी आप बता रहे थे, तो लाइसेंस लगाने का फिर क्या मतलब हुआ? तो some licenses restrict that also ना, every license क्रिएटिव doesn't. कॉमन वाले जैसे बता रहे थे, उसमें एक में था ना कि आप रीयूज कर सकते हैं और एक में था कि नहीं कर सकते, तो मतलब फिर कोई लाइसेंस क्यों लेगा? फ्री अगर सोर्सेज है अवेलेबल। नहीं, कुछ लाइसेंस में रेस्ट्रिक्शन भी है ना। एवरी लाइसेंस यू कैन नॉट, आई मीन लाइक कमर्शियली यू कैन नॉट यूज ऑल द license. Some licenses allow commercial use, some licenses allow no derivatives, मतलब you cannot change but you can use, आपको रिमिक्स कर सकता है। ये सम लाइसेंसेस जो नो डेरिवेट में आपको दिखाए दे, उसको आपको चेंज नहीं कर सकता है, बट यू कैन यूज दैट फॉर योर टीचिंग लर्निंग पर्पस, है ना, आपको विदाउट चेंजिंग। द अदर थिंग इज दैट यू डोंट हैव टू रन बिहाइंड टेकिंग देयर परमिशन, क्योंकि वो ऑलरेडी ओपन कर दिया जो क्रिएटर। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इफ इट इज एन ओईआर, आपको तो मिलेगा ऑनलाइन में कहीं इसका ओईआर, यू डोंट हैव टू टेक माय परमिशन, आपको यूज कर सकता है। आपको इसमें 2 स्लाइड्स या 3 स्लाइड्स आपको चेंज करना आप चाहते हो तो आपको चेंज कर सकते। मान लो आपको ये ओईआर के ऊपर आप किसी और को आपको लेक्चर देना है, इफ दिस इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, आपको इसको डाउनलोड करके आपको यूज कर सकते हैं, मेरे से परमिशन पूछने की जरूरी नहीं है। आपका जो ऑडियंस, दूसरा ऑडियंस है, उसको ये 2-3 स्लाइड का जरूरी नहीं है, तो आपको इसमें से निकाल सकता है। तो ये सारा है, पॉसिबिलिटी है लाइसेंस का। ओके सर, थैंक यू। एंड दैट इज वन ऑफ द फीचर्स ऑल्सो। काफी सारे इंटरनेट में आपको मटेरियल मिलेगा, सारा ओईआर भी नहीं है, क्योंकि देयर इज नो लाइसेंस अटैच्ड टू दैट, अटैच्ड टू इट। So even if you are not finding any license, then it is sure that this is a copyrighted material. At some point we will be into trouble if you are using that. इसके ऊपर ही तो इसके that's why all those plagiarism issues and all came into the academic all the world, है ना। प्लाजर्स, आप किसी का मटेरियल आपको यूज नहीं कर सकते जो इंटरनेट में अवेलेबल है, बट ओईआर है तो आपको डेफिनेटली यूज कर सकता है। अदर मटेरियल्स इज यू कैनॉट यूज दैट। बोलिए, और कुछ Sir, है? sir, may मणिक I जी, ask a question to you, sir? बोलिए मणिक जी। Just you have said about the plagiarism, sir. So if a person is found doing plagiarism in his research work or her research work, that is, what kind of penalties can be imposed on that person? वो तो आपको याद होगा, जैसे ये यूजीसी का आपने देखा होगा शायद, जो 2016 में एक यूजीसी का गजट आया था प्लाजरिज्म पॉलिसी के ऊपर, है ना, 2016। आई जस्ट शेयर इफ यू वांट दैट। सो इट क्लियरली मेंशंस, शायद यही है, पीएचडी 2016। ये नहीं है।
2018 देखता हूँ। नहीं, ये नहीं है। ट्वेंटी एटीन नहीं है। ये आप देखा होगा शायद, ये काफी पहले 4-5 साल हो गए ये गैसेट आने। See, this is the document. Can you see my slide? I mean, like a screen. Yes, sir. देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, promotion of academic integrity and prevention of plagiarism in higher educational institution, regulations 2018, जुलाई 2018 में। तो 5 साल हो गया भाई, 5 साल से ऊपर हो गया। तो जो पेनल्टी के बाद कोई बोल रहा था, पेनल्टी इसमें दिया है। जो स्टूडेंट्स के लिए भी पेनल्टी है, देखिए, पेनल्टीज इन केस ऑफ प्लाजियरिज्म ऑफ इन सबमिशन ऑफ थीसिस एंड डिसर्टेशन, वो जो भी जैसे रिसर्च आर्टिकल में भी ये इम्पोज्ड है पेनल्टी रिसर्च पब्लिकेशन। देखिए, लेवल 0 आपको, दिस इज व्हाई आई डोंट नो मेनी दोस आर इन हायर एजुकेशन, दे मे बी सीइंग मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज नाउ अलाउ ओनली 10% ऑफ प्लाजियरिज्म रिपोर्ट। द प्लाजियरिज्म checking percentage has to come less than 10, है ना। if it is less than 10, minor similarities, no penalty, कोई पेनल्टी नहीं है। सी, आपका कोई रिसर्च आर्टिकल या थीसिस आपने पब्लिश किया, आपने अवार्ड भी ले लिया, डिग्री भी ले लिया, बट एट सम पॉइंट somebody checked its plagiarism and the plagiarism percentage is found to be in between 10% to 40%, तो ये पेनल्टी है। देखिए, शैल बी आस्क्ड टू विड्रॉ द मैन्युस्क्रिप्ट। कभी कभी ये डिग्री विड्रॉ करने के लिए भी इसका जो इम्प्लीकेशन है, इफ द प्लाजियरिज्म परसेंटेज इज फ्रॉम 40 to 60%, आस्क्ड टू विड्रॉ मैन्युस्क्रिप्ट, शैल बी डिनाइड अ राइट टू 1 एनुअल इंक्रीमेंट। ये टीचर्स है तो, है ना, 1 इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। शैल नॉट बी अलाउड टू बी अ सुपरवाइजर टू एनी मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी डिग्री स्कॉलर्स। if the plagiarism percentage is more than 60%, 2 successive increment आपको मिलेगा नहीं। shall not be allowed to be a supervisor to any, तो आपका गाइडशिप भी चला जाएगा हायर एजुकेशन में। थीसिस का देखिए, see, if it is 60% more than plagiarism, such a student registration for that program shall be cancelled. If it is in between 40 to 60, such a student shall be debarred from submitting a revised script for a period of 1 year. तो जो पेनल्टी का कोई बात पूछा था, आप एक बार इसको देखिए। दिस इज द डॉक्यूमेंट, दिस इज द एट प्रेजेंट द लॉ विच वी हैव रिलेटेड टू प्लाजियरिज्म, है ना। Thank you, sir. Thank you very much. प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटेग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लाजियरिज्म इन हायर एजुकेशन 2018 में लागू हुआ है ये, 2018 में। ये तो दिस इज वेरी कॉमन इन ऑल द यूनिवर्सिटीज नाउ। आप कभी भी कहीं भी आप जमा कीजिए रिसर्च आर्टिकल, वो जो उसका परसेंटेज है 10% से कम ही होना है, 10%। और कुछ है? और कुछ आपका जो पीजीडीईटी रिलेटेड कुछ है तो भी पूछ सकता है। सर, मैंने वो 135 का जो प्रोजेक्ट था, उसमें जो एक्टिविटी जो मेंशन की गई थी,
तो उसमें कई जगह पे था कि स्कूल्स में बात करनी है। तो मेरे सवाल ये था कि मान लीजिए मैंने जो एक्टिविटीज चूज की है किसी भी क्रेडिट की, तो वो मतलब कि दोनों में वो मेंशन किया गया कि आपको स्कूल में जाकर सर्वे करना या फिर जो भी है क्वेश्चन बनाना है। तो क्या सिमिलर स्कूल हो सकता है एक एक्टिविटी के लिए, सॉरी दोनों एक्टिविटी के लिए, हाँ, अलग अलग होगा? कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। कोई दिक्कत नहीं। और कुछ आप कहाँ गए अंजलि जी? व्हाट यू आर डूइंग, आई मीन लाइक वेयर यू वर्क? Sir, I'm in Lucknow and I'm working with NGO Vikramshila in UP. क्या कर रहा है? आई मीन लाइक योर NGO, एनजीओ पे? NGO, जी जी, चित्रा जी, NGO, चित्रा जी। I'm working in Abu Dhabi Indian School as a Okay. teacher. ओके ओके, गुड। मानिक जी? Sir, presently I'm working in North Lakhimpur, Assam, as a school teacher. Actually, I'm the principal of a school, sir. ओके ओके, ग्रेट। विकास जी? सर हम बेसिक एजुकेशन उत्तर प्रदेश के साथ काम करते हैं, उनके टेक्निकल पार्टनर हैं, जो किताबें लिखी जाती हैं बेसिक एजुकेशन में, ट्रेनिंग होती है टीचर्स की, उसमें ओके ओके इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करते हैं स्टेट की। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो ठीक है, फिर वी विल स्टॉप हियर, है ना? तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी sure मच, sir. आपने लेट में Thank you. Thank you, explain sir. किया। Thank you, थैंक sir. यू। Thank you from my side also. थैंक यू सर। ओके, बाय। Just leave the call.